Hello friends, welcome to Reyans classes YouTube channel. Friends, again we will discuss today some probable questions, some important questions of general studies in paper 1 for Odisha Civil Services Prelim examinations, which is going to be held on October 16 this month, October 16. So I hope those who are competitive aspirants preparing for OPSC and other competitive examinations, this video will be helpful for them. Further, those who are those who are watching this video first time, so please subscribe our channel and also share and like to your friends so that they will also gain some knowledge from this video. This is our mobile number 7978584651 and another mobile number 7008421273. You can contact us in this number. First question, consider the following statements with regards to Exim Bank, that is Export Import Bank of India. Clear? So the organization was established in 1982 under the Export Import Bank of India Act 1981 as a purveyor of export credit. Clear? Exim Bank is owned jointly by Indian government and RBI. Jointly owned by Indian government and RBI. It offers term loans to Indian companies for equity investments in their overseas joint ventures. Overseas, that means in other country, joint ventures or wholly owned subsidiaries. Other country थिबा joint venture हो किंबा wholly owned subsidiary हो सेतरे investment करिया पय लोन देता है. देखो तो which statement is correct? Answer देखिबा. Statement 1 and 3 is correct. That means statement 2, that is owned jointly by Indian government and RBI, is incorrect. So answer देखिबा. Exim Bank or Export Import Bank of India is India's leading export financing institute. Clear? एडाला कोन export financing institute that engages in integrating foreign trade and investment with the country's economic growth. Founded in 1982 by the government of India, and Exim Bank is a wholly owned subsidiary of the Indian government. Clear? Not by RBI. The current managing director is David Raskin. It is headquartered Export Import Bank of India headquarter code is Mumbai, Maharashtra. Exim Bank Foundation C in 1982 under the Export Import Bank of India Act 1981 as a purveyor of export credit, and R.C. Saha was the bank's first chairman and managing director. Clear? Next jiva, consider the following statements with regards to Sri Ramanuja Acharya. देखो रामानुज आचार्य को विषय कौन दिया जाइए. He was also referred to as Ilaya Perumal, which means the radiant one. His philosophical foundations for devotionalism were influential to the which movement? Bhakti movement. He is famous as the chief proponent of Visishta Advaita sub-school of Vedanta. So, तीनटी statement correct कि नहीं देखिबा. Answer is all of these. That means all are correct. Further आमे किछि जानिबा रामानुजाचार्य को विषय रे. रामानुजाचार्य को टाइम रे सी थिले 1077 CE to 1157 पर्यंत, and also known as Ramanujacharya, तांको ना कोन Ramanuja, was an Indian Hindu philosopher, guru and social reformer. He is noted to be one of the most important exponents of Sri Vaishnavism tradition. उसी कहार exponent थिले Vaishnavism. His philosophical foundations for devotionalism were influential to Bhakti movement. Clear? एतिक पर्यंत थिला important, but तार परे देखंतु रामानुजंकर गुरु किए थिले यादव प्रकाश, is a scholar who according to tradition belongs to Advaita Vedanta tradition. Ramanujacharyankar guru ko tradition to belong करथिले तो Advaita Vedanta, but probably was a Vedanta scholars. Sri Vaishnava tradition holds that Ramanuja disagreed with his guru and non-dualistic Advaita Vedanta, and instead followed in the footsteps of Tamil Alvar's tradition, the scholars Nathamuni and Yamunacharya. Clear? Ramanuja is famous as the chief proponent of Visishta Advaita sub-school of Vedanta, and his disciples were likely authors of texts such as Satyayana Upanishad. Ramanuja himself wrote influential texts such as Bhashya on the Brahma Sutra and Bhagavad Gita, all in Sanskrit. जानले को टेक्स्ट लिखी भाष्य का उपरे ब्रह्मसूत्र उपरे एंड भगवत गीता उपरे. लैंग्वेज कोड थिला संस्कृत. नेक्स्ट,
Consider the following statements with regard to private member bills in the parliament. Private member bill विषय रे discussion करिवा. No private member bill has ever been passed in the Indian parliament. The government bills can be introduced and discussed on any day. Private members bill can be introduced and discussed only on Friday. Its introduction in the house requires 15 days notice. बुझी पारले से कौन कहला जे वर्तमान पर्यंत पार्लियामेंट रे इंडियन पार्लियामेंट रे कोनोसी प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हेई नाही पास हेई नाही. द गवर्नमेंट रो जो बिल अछि जोटा कि पब्लिक बिल सेटा केबे भी इंट्रोडक्शन हेई परिबो पार्लियामेंट रे. बट प्राइवेट मेंबर बिल फ्राइडे ही हबो शुक्रवार ही हबो. तार इंट्रोडक्शन इन द हाउस जदि सी इंट्रोड्यूस करिया पई हेले ताकू 15 डेज रो नोटिस दरकार. तो देखो तो को स्टेटमेंटा करेक्ट टू ओनली करेक्ट दैट इज से पब्लिक बिल जोटा कि गवर्नमेंट बिल सेटा केबे भी इंट्रोड्यूस हेई परिबो पार्लियामेंट रे. बट प्राइवेट मेंबर बिल केवल फ्राइडे ही इंट्रोड्यूस हेबो. रिमेनिंग स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज इनकरेक्ट. तो कौन हिची देखिबा. देखो पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल. पब्लिक बिल कार ना रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट. प्राइवेट बिल ऑपोजिशन पार्टी. बुझिले. इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय ए मिनिस्टर. पब्लिक बिल टा गोटे मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस हेबो. बट प्राइवेट मेंबर बिल एक्सेप्ट ए मिनिस्टर अदर देन ए मिनिस्टर एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इटा इंट्रोडक्शन हेई परिबो. इट रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट रो जहा पॉलिसी अछि ताकू रिफ्लेक्ट करछि. बट प्राइवेट बिल रे कोन होछि ना गवर्नमेंट रो पॉलिसी अगेंस्ट रे जो स्टैंड थाउछि सेमानकर जो ओपिनियन थाउछि सेटा को रिफ्लेक्ट करिवो. इट हैज ग्रेटर चांस टू अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट. जेहेतु मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स एंड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट रे थांती तेणु तार चांसेस थाए बहुत सी पास हेबार अप्रूव हेबार पार्लियामेंट रे. बट एज प्राइवेट बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑपोजिशन पार्टी सो पार्लियामेंट रे प्राइवेट बिल टा पास हेबार चांसेस बहुत कम थाए. Its rejection by the House amounts to expression of want of parliamentary confidence in the government and may lead to its resignation. जदि कोनोसी पब्लिक बिल बा गवर्नमेंट रो बिल गोटे जदि रिजेक्ट हला दैट मीन्स सेथरे किछि भूल अछि एंड द गवर्नमेंट इज इनकैपेबल टू प्रिपेयर ए बिल ना. सेथि पय लिखि पार्लियामेंट द्वारा से कॉन्फिडेंस को पार्लियामेंट रो कॉन्फिडेंस को से लॉस करि परिबो. सो दैट कि इट रिलेटेड होछि नो कॉन्फिडेंस मोशन को. But its rejection by the House has no implication on the parliamentary confidence in the government or its resignation. जदि प्राइवेट बिल को रिजेक्ट कराला तार सहित पार्लियामेंट रो कॉन्फिडेंस को किछि लेन देन नै किछि इंपैक्ट पड़िबोनी किबा जो रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी थिबो सेमानक ऊपर मध्ये कोनोसी इंपैक्ट पड़िबो नाही. इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 7 डेज नोटिस. कोनोसी पब्लिक बिल बा गवर्नमेंट बिल जदि इंट्रोडक्शन हेबाकु थिबा हाउस रे ताकू 7 डेज नोटिस दरकार. बट गोटे प्राइवेट बिल जदि इंट्रोडक्शन करिया पय थिबो इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 मंथ नोटिस. बुझिले 1 मंथ नोटिस. देखो इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विथ द लॉ डिपार्टमेंट. पब्लिक बिल बा जो गवर्नमेंट बिल रोची सेटा जतबेले ड्राफ्ट करा जाउची प्रिपेयर करा जाउची कहा द्वारा करा जाउची ना कंसल्ट डिपार्टमेंट द्वारा करा जाउची एंड with consultation with the law department सहित कंसल्टेशन करा जाउची लीगली केते दूर सेटा युक्तियुक्त ताकू देखिकरी करा जाउची. बट इट्स ड्राफ्टिंग इज द रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न्ड. बट प्राइवेट बिल तो ड्राफ्टिंग प्रिपेयर जो मेंबर प्रोड्यूस करिवो इंट्रोडक्शन करिवो से मेंबर ऊपर ही डिपेंड रहउची. बुझिले प्राइवेट बिल एंड पब्लिक बिल भीतर डिफरेंस जानिले. नेक्स्ट जीवा. A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of the application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India. देखो तो आर्टिकल कोड अछि 14, 28, 32, 44. रिकॉल करंतु आर्टिकल कोडा कोन रिफ्लेक्ट करूछि. देखो से क्वेश्चन कोन कला जदि लेजिस्लेशन सी जदि पावर दबो कोनोसी एग्जीक्यूटिव बा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को जो जहा कि अनगाइडेड थिबो अनकंट्रोल्ड थिबो डिस्क्रिशनरी पावर एकछत्रवाद शासन हो जिवो. बुझिले इन एप्लिकेशन ऑफ लॉ को जदि एप्लिकेट करिबारे बा इंप्लीमेंट करिबारे जदि सेमानकु सब प्रकार पावर दिया जिवो जे से पावर रे कोनोसी प्रकार कंट्रोल नथिबो गाइड नथिबो ताले कोन करा जिवो सेमाने कोन करिवे लॉ को मिस यूटिलाइज करिवे लॉ को सेमाने मिस यूटिलाइज करि पारिबे. सो दैट कि तो कोन होबो इक्वल फॉर लॉ
समस्त आईन सामान तो जदि जो मैंने आईन को इम्प्लीमेंट कर एकछत्रवाद कला भाई जदि आम सब पावर देदेबा तो से कौन करेंगे ना से इम्पार्शियलिटी पलि आसो पार्शियलिटी से पलि आसो बुझे तेणु करा को लॉ भायोलेट कर देखो आंसर कौन हम आर्टिकल 14 बुझे इक्वल फॉर लॉ लॉ आगे समस्ते समान तेणुक जदि से ये प्रकार पावर दिज्व ताले ये लॉ को ये आर्टिकल को भायोलेट कर बुझे देखो आम डिस्कसन करवा चार्टा आर्टिकल आर्टिकल 14 द स्टेट शाल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टेट केबे भी क्या मना करनी एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया द concept of equality before law is an element of the concept of rule of law this concept has following three elements कौन गोटे absence of arbitrary power से absence ए एरिया रे इंडिया टेरिटोरी रे absence of arbitrary power रहबो equality before the law that is equal subjection of all citizens the ordinary law of the land आईन आगे समस्ते समान कौन से arbitrary power एथिरे रहिबनी The constitution is the result of the rights of the individual. So the first and the second elements are applicable to India. This means equality before law under Article 14 connotes the absence of arbitrary powers with the authorities. That means Article 14 जहाँ कहूँ जे अथॉरिटी को पाखरे आर्बिट्रेरी पावर नहीं यदि आर्बिट्रेरी पावर को से माने यूज करिवे त माने एकछत्रवाद शासन हो जिवो Thus, when a legislation confers uncontrolled and discretionary powers on any authority, it tends to violate Article 14 of the Constitution. Clear? Article 28 कौन कहला देखंतु the right to freedom of religion. It provides that no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds द्वारा जोटा कि मेंटेन करा जाउथबो से इंस्टीट्यूशन रे कोनोसी प्रकार रिलीजन को इंपोर्टेंस दिया जिवो नाही फर्दर नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड shall be required to attend any religious instruction or worship in what institution without his consent जदि कोनोसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे गोटे लोक गोटे पर्सन के सीए जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट द्वारा जो इंस्टीट्यूशन चलुची सेठारे से कौन तार विदाउट कंसेंट रे से कौन प्रकार रिलीजियस एक्टिविटीज रे अटेंड करि परिबो करबा को बाध्य नुह हला आर्टिकल 32 दैट मीन्स आर्टिकल 20 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जने चाहिले कौन प्रकार धर्म को मध्य से फॉलो करि परिबो आर्टिकल 32 the right to remedies for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen गोटे एग्राइव्ड सिटीजन रो अधिकार रोची सी तार फंडामेंटल राइट को किपरि एनफोर्समेंट करिवो आर्टिकल 32 अफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इफ ए फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड जदि तार फंडामेंटल राइट वायोलेटेड होईची ताकू जदि कि कोनोसी प्रकार तार जहाँ भी मौलिक अधिकार अछि सेति जदि से वंचित होची तेणु से सुप्रीम कोर्ट को जाई परिवो Under this article, the Supreme Court can issue writs for the enforcement of any of the fundamental right of the citizen. तो सुप्रीम कोर्ट कौन करिवो रिट इश्यू करिवे ठीक अछि नेक्स्ट जबा आर्टिकल 44 provides for one of the directive principles of a state policy. Article 44 says that the state shall endeavor to secure for the citizens uniform civil code throughout the territory of India. So uniform civil code को implement करिया पई बोलिकरी ताकू केमती थ्रू यूनिफॉर्म सिविल कोड सिटीजन मान को केमती सेफली रखा जिवो सिक्योर करा जिवो से विषय रे को जाई जे आर्टिकल 44 रे बुझले नेक्स्ट जिबा कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सो देखो 1 2 3 4 चारटा स्टेटमेंट अछि से देछि व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव इवेंट रो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फर्स्ट कोड हेतला लास्ट कोड हेतला स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम पूर्वरु वर्तमान आगु को आगु कोन हेतला देखो ऑप्शन कोन फर्स्ट स्टेटमेंट अछि राइज ऑफ प्रतिहारस अंडर किंग भोजो प्रतिहार विषय को जाइछि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन 1 पल्लव पावर महेंद्र वर्मन 1 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोलो पावर बाय प्रणतक 1 पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल देखिबा केबे इडा हितला आंसर कोन हबो देखंतु ऑप्शन सी फर्स्ट देखंतु कोडा आसीबो पल्लव बिकम्स ए मेजर पावर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महेंद्र वर्मन 1 एटा केबे हितला 571 बीसी टू 630 तो फर्स्ट इडा आसीबो कोडा 2 आसीबो
Gopala founded the Pala dynasty in CE 750 and ruled till 770s. तो 750 रु 770 गोपाल फाउंडेड पाल डायनेस्टी. तो तापर कोड आसीबो 4. किंग भोज ऑफ प्रतिहार रूल्ड ड्यूरिंग 836 885 CE हला किंग भोज. तापर आसिला पाल डायनेस्टी पर एटा कोड आसिला किंग भोज. देखंतु ऑप्शन ए जोटा स्टेटमेंट 1 अच्छी तो 1 आसीबो. देन परंतक 1 ऑफ द चोलो डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग 907 टू 953 CE 907 रु 953 पर्यंत जोटा कि होची लास्ट है ना 3 2 4 1 3 विल बी द आंसर. क्लियर. नेक्स्ट जिबा विथ रेस्पेक्ट टू अफ्रीकन यूनियन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. आमे वर्तमान अफ्रीकन यूनियन विषय रे हम देखिबा. African Union's Secretariat, the African Union Commission, is based in Abuja, Nigeria. The Abuja Treaty led to creation of the African Union. तो इथिरे हमें कौन करिबा गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनियन विषय हमें डिस्कशन करिबा. स्टेटमेंट 1 एंड 2 देखंतु कोडा करेक्ट. नथिंग. दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज इनकरेक्ट. देखिबा अफ्रीकन यूनियन विषय रे. अफ्रीकन यूनियन गोटे होची कंटिनेंटल यूनियन consisting 55 member state. एथिरे केतटी मेंबर अछंदी 55 55 जण located on the continent of Africa रे अछि. एटा केवल अफ्रीका कंटिनेंट रे. The African Union was announced in the Sirte Declaration in Sirte, Libya. लिबिया कोड अछि अफ्रीका रे. देखंतु एटा होछि कंटिनेंट. एटा साउदर्न साइड रे अछि. तो आपन को इंपोर्टेंट जे जेटा कोड अनाउंस कराइतिला एस रे स्टार्ट हो. सिर्टे डिक्लेरेशन मन रखिबे. सिर्टे डिक्लेरेशन because continental location hochi southern side. Clear. On 9th September 1999 calling for the establishment of African Union. The bloc was founded on 26 May 2001 in Addis Ababa, Ethiopia. बुझिले एटा केबे हिची इथियोपिया रे 2001 रे हितला एडिस अबाबा रे and launched on 9 July 2002 in Durban, South Africa. The intention of the African Union was to replace Organization of African Unity. आगुरु जो Organization of African Unity थिला ताको एटा रिप्लेस कला. Established on 25 May 1963 रु सेडा चलुतला कोडे एडिस अबाबा by 32 signatory governments. The OAU was disbanded on 9 July 2002. 9 July 2002 रे Organization of African Unity को बंद करा गला एंड तार जगह रे African Union को स्टार्ट कराला. The most important decision of the African Union are made by the Assembly of the African Union, a semi-annual meeting of the heads of states and governments of its member state. जानि परले की रहिबे एंड semi-annual meeting होची तार important decision. The African Union Secretariat Code अछि. The African Union Commission is based in Addis Ababa. एट देखंतु African A अछि. शॉर्टकट जोटा African अछि A African Union रो तार सेक्रेटरीट कोड अछि CBA तो एडिस अबाबा इथियोपिया रे. The largest city in the African Union is Lagos, Nigeria, while the largest urban agglomeration is Cairo, Egypt. The African Union has more than केते people अछंदी 1.3 billion people and area of around 29 million kilometer square. Includes popular world landmarks such as Sahara Desert अछि अफ्रीका रे and Nile River अछि अफ्रीका रे. बुझिले. The primary working language होची कोन अफ्रीका यूनियन रो वर्किंग लैंग्वेज अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज. सेमन अफ्रीकन तो अफ्रीका रे को लैंग्वेज यूज होची बोली कि आपण भाबुथिबे अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड स्पेनिश एंड किसवाली गुड लैंग्वेज यूज होची अफ्रीकन यूनियन रे. मन रखिबे किसवाली. Within the African Union there are official bodies such as the Peace and Security Council भी अच्छे official body and Pan African Parliament ଗୋଟେ official body भी अच्छी African Union रे. जानिले African Union विषय रे. Next, Tropic of Cancer passes through which of the following state? देखंतु in India रे Tropic of Cancer जोटा कर्कट रेखा रहिची सेटा को स्टेट पास करिकरी क्रॉस करची इंडिया रो मैप रे. बुझिले. ऑप्शन कौन अच्छी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल. तो चलंतु आंसर देखिबा थ्रू मैप. देखंतु एडा रहला इंडिया एंड इंडिया रो आमे जदी वेस्टर्न साइड रो आमे देखिबा फर्स्ट कोड आसीबो गुजरात आसीबो. गुजरात सेकंड कोड आसीबो राजस्थान को क्रॉस करची. राजस्थान आसीबो राजस्थान रो साउदर्न पोर्ट रे क्रॉस करची साउदर्न पोर्शन रे. मध्य प्रदेश रो सेंट्रल रे क्रॉस करची तो मध्य प्रदेश.
देन छत्तीसगढ़ नॉर्दर्न साइड रे क्रॉस करछि छत्तीसगढ़, झारखंड साउदर्न साइड रे क्रॉस करछि झारखंड, वेस्ट बेंगल सेंटर रे क्रॉस करछि, देन अगेन त्रिपुरा रो साउदर्न साइड रे क्रॉस करछि, एंड मिजोराम रो सेंटर रे क्रॉस करछि। ठीक अछि, जानिले तो आंसर कोड अब 1 2 3 5 6 है ना। देखि दियंतु को स्टेट देगिरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करछि इंडिया रे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा एंड वंशधारा चारिटा रिवर ना देछि, व्हिच ऑफ द एबोव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट रु को रिवर राइज हेछि बोली कि से क्वेश्चन पचारछि। तो चलंतु आपण माने जानथिबे ईस्टर्न घाट जोटा कि ओडिशा रे ईस्टर्न बॉर्डर एंड इंडिया रो ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट को लागि कि हेछि, जोटा कि हमर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब स्टेट रे जो एरिया कवर हेछि माउंटेन सेटा होछि ईस्टर्न घाट रो। ठीक अछि, देखंतु ओडिशा रे को रिवर जो ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा अछि, ईस्टर्न घाट रो कोड हेछि। देखंतु फर्स्ट हमें ब्राह्मणी स्टेटमेंट हिसाब रे देखिबा। ब्राह्मणी, देखंतु ब्राह्मणी रिवर कोड अछि, ब्राह्मणी रिवर आसिला देवगढ़, तो इट हला इनकरेक्ट बिकॉज इट तो ईस्टर्न घाट रो नाही। सेकंड देखंतु नागावली देखंतु इट हला स्टेटमेंट करेक्ट, नागावली ईस्टर्न घाट रो राइज हिछि। तापरे हला सुवर्णरेखा देखंतु कोड अछि, सुवर्णरेखा तो नुह, कारण सुवर्णरेखा रिवर पूरा अच्छी नॉर्दर्न मोस्ट रे, तेणु करिकी सुवर्णरेखा नुह, वेस्ट बेंगल सेपट साइड अच्छी सुवर्णरेखा, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शन। देन वंशधारा देखंतु, वंशधारा नागावली रो ऊपर जोटा अछि सेटा होछि वंशधारा। तो ऑप्शन कोडा हो नागावली एंड वंशधारा, दीटा ही वेस्टर्न घाट रो राइज हेछि 2 and 4। Consider the following statements with regard to ordinance making power of governor। देखंतु ordinance making power of governor विषय रे भी डिस्कशन करबा ए क्वेश्चन रे। स्टेटमेंट कोन देछि, the governor can promulgate an ordinance when the legislative assembly is not in session in case of the unicameral legislature, or when both legislative assembly and council are not in session in case of bicameral legislature। unicameral legislature जोटी कि केवल legislative assembly थिबो, and bicameral legislature जोटी both legislative assembly and council run करथुबो। His power to promulgate ordinances is one of the discretionary power given to the governor। एटा होची तांकर discretionary power, से सो इच्छा रे करि परिबे। President's instruction on the state ordinance are required if a bill containing the same provisions would have required the previous sanction of the president for its introduction into the state legislature। President's instruction केतेबेले दरकार हुए जदि से बिल डा containing same provisions would have same provision and जोटा भी required करछि previous sanction of the president, है ना। तो देखंतु डिस्कशन करबा बर्तन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर कोड ठीक अछि। आंसर अब 1 and 3। 1 and 3 मीन्स 2 रे कोन देछि, जो हिज पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस इज वन ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर होछि रॉन्ग, एटा गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर नुह। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर केते आर्टिकल रे प्रोविजन रछि, अंडर आर्टिकल 213 213 इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, एटा होछि सेम सिमिलर प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 123 है ना। प्रेसिडेंट को आर्टिकल रे प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर विषय लिखा जाय अंडर आर्टिकल 123। द गवर्नर कैन इश्यू ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जिते बेले दुईटी कंडीशन फुलफिल हो सेते बेले ही गवर्नर कैन इश्यू करि परिबो ऑर्डिनेंस। कौन कौन से कंडीशन, द गवर्नर कैन ओनली इश्यू ऑर्डिनेंसेस व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट बोथ हाउसेस इन सेशन, जिते बेले बोथ हाउसेस रे सेशन रे थिबो, और वेयर देयर आर टू हाउसेस इन ए स्टेट both houses are not in session, जदि सेतरे दीटा हाउसेस थिबो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल इन स्टेट बोथ हाउसेस आर नॉट इन सेशन, दीटा जाको सेशन रे नथिबो। फर्स्ट देला देखो कंडीशन, कैन इश्यू ऑर्डिनेंसेस व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट बोथ हाउसेस, गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट बोथ हाउसेस इन सेशन रे थिबो करि परिबो, जेते बेले नथिबो हना कि टू हाउसेस इन ए स्टेट बोथ हाउसेस आर नॉट इन सेशन करि परिबो। The governor must be satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action। से गवर्नर सैटिस्फाई हेबा दरकार जे परिस्थिति एमती अछि जे ताकू परिस्थिति बाध्य करूची ऑर्डिनेंस मेकिंग
to pass करिया पे ordinance. The court cannot question the validity or ordinance on the ordinance on the ground that there was no necessity or sufficient ground for issuing the ordinance by the governor. Ordinance जदि pass करिवे सेटा काहेकि करा गला को ground रे करा गला बोली court question करि परिबो नाही बुझले. The existence of such necessity is not a justiciable discretionary. जो परिस्थिति हितिबो सेटा गुटे justiciable discretionary नुह. The exercise of ordinance making power is not discretionary. The governor exercises this power on the advice of the cabinet. बुझले सीधा सी सो इच्छा रे करि परिबेनी सीए कार एडवाइस रे करिवे कैबिनेट जो मंत्री मंडल थांती कैबिनेट रो एडवाइस रे से करिवे जानिले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर. Consider the following statements with regard to preamble of the Indian Constitution. वर्तमान preamble ऊपर हम किछि डिस्कशन करिबा. The ideas behind the preamble to India's constitution were laid down by Jawaharlal Nehru's objectives resolution adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947. The date mentioned in the preamble is when it was adopted, November 26, 1949. The preamble of the constitution can't be amended. तो देखो एथुर करेक्ट स्टेटमेंट रू करेक्ट कोडा 1 and 2 काहेंगी द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट बी अमेंडेड एडा अमेंड हेई परिबो एंड आगुरु हेइची मध्य प्रीएम्बल केबे अमेंडेड हेइची देखिबा चलंतु. द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्वेश्चन आसीबो कहा ऊपर बेस करि रिची ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which was drafted and moved in the Constituent Assembly by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 रे clear and adopted by Constituent Assembly on 26 November 1949 रे अडॉप्ट करथिला Constituent Assembly preamble को and came into force के बेतला January 26 1950 रे इतला preamble केबे came into force January 26 1950. The Supreme Court of India originally stated in the Beruveri case presidential reference that the preamble is not an integral part of Indian Constitution. Exam रे आसुची को issue रे को case रे Supreme Court कहिची जे preamble is not an integral part of Indian Constitution, that is Beruveri case, and therefore it is not enforceable in the court of law. However, the same court in 1973 Kesavananda case overruled earlier decision तर जो earlier decision थिला ताको overrule करिगिरी and recognize कला that the preamble may be used to interpret ambiguous areas of the constitution where differing interpretation present themselves. सी कहला कोन ना ताको interpret करा जाई पारिबो ना constitution रे. But in 1995 case of Union Government versus LIC of India रे सी कोन कहिछि Supreme Court पुनी once again held that the preamble is an integral part of the constitution. तो देखले सुप्रीम कोर्ट बेरुवारी केस रे कहला जे preamble टा constitution रो integral part नुह. 1973 रे केशवानंद केस रे कहला जे preamble को इंटरप्रेट करी हबो. देन 1995 रे सुप्रीम कोर्ट अगेन डिसीजन ला जे यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया रो केस रे जे preamble होची constitution रो गोटे इंटीग्रल पार्ट बुझिले. As originally enacted, the preamble described the state as sovereign, democratic and republic. प्रथमे जेतेबेले originally तीनटा वर्ड हिंतिला to which the terms secular and socialist were later passed by captive parliament during the emergency in 42nd amendment. आपन को क्वेश्चन रे आसीबो जे 42nd secular and socialist इ दुइटा in which amendment एडा preamble रे एड हला, that is 42nd amendment को ग्राउंड रे during emergency. देखो केबे हितला कहा द्वारा हितला डिस्कशन करिवा. द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड ओनली वंस इन 18 डिसेंबर 1976. से जो क्वेश्चन रे हमको देइतिला अमेंडमेंट हेई परिबो नाही बोली कि बट ऑलरेडी अमेंडेड हेइची 1976 रे विथ मोस्ट ऑफ द अपोजिशन बीइंग जेल्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन इंडिया. इमरजेंसी टाइम रे अमेंडेड हेइतिला अपोजिशन पार्टी सब जेल जाइतिले एंड द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सेतेबेले कहार थिला कांग्रेस रो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट pushed through several changes in the 42nd amendment of the constitution. 42nd amendment रे आकु चेंज करिछि. Through this amendment the word socialist and secular were added between the words sovereign, democratic and republic, and the word unity of the nation प्रथम कोन थिला unity of the nation were changed to unity and integrity of the nation. यदि आपन को क्वेश्चन आसे unity of the nation in preamble changed to unity and integrity of the nation in which amendment, that is 42nd amendment. Clear? Next jiba
Which of the following articles in the Indian Constitution is associated with education? Education सहित Indian Constitution रो को article India रे education सहित relevant अटे. Article 21A आपण जानचंदी एटा education सहित. Article 27, 45 and 47 देखंतु को ऑप्शन टा एठी होबो करेक्ट ऑप्शन. चलो तो देखिबा आंसर. Article 21 provides that the state shall provide free and compulsory education to children between 16 to 14 year of age. एटा हेगला केते आर्टिकल 21 ए रो जोटा हेगला जे 6 वर्ष रु 14 वर्ष पर्यंत गोटे स्टेट से एन्श्योर करिवो जे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देबा पई चिल्ड्रन मानकु 6 वर्ष रु 14 वर्ष भाबो 6 वर्ष हला परे. बट व्हाट अबाउट बिफोर 6 एज बिफोर 6 ईयर 6 वर्ष हेले सिना कंपल्सरी एजुकेशन पाइबो 6 वर्ष पूर्व कंपल्सरी एजुकेशन पाइबा पई को आर्टिकल रे लिखा आइछि. On the other hand, Article 45, clear, Article 45 provides that the state shall endeavour to provide yearly childhood education and care for all children up to 6 years of age. तो फर्स्ट गोटे छुआ जन्म होला परे तार जो एजुकेशन जेबुड आरंभ होबो अंडर आर्टिकल 45 रे सी 6 वर्ष पर्यंत एजुकेशन पाइबो एंड 6 वर्ष टू 14 वर्ष अंडर आर्टिकल 21 ए रे पाइबो. क्लियर. एजुकेशन रिलेटेड हला 21 ए एंड 45. तो आर्टिकल 27 कोन चलंत देखिबा. फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. जने चाहिए सी गोटे पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करिया पय बोलिकरी सी टैक्स दे परिवार तार फ्रीडम अछि. नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ व्हिच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियंस डिनोमिनेशन. तो देखंतु आमे काहा को बाध्य करि परिबा नै जे गोटे ए रिलीजियन रो प्रमोशन पय बोलिकरी जहा एक्सपेंडिचर हबो सेटा को तुमे दियो बोलिकरी आमे काहा को बाध्य करि परिबा नै. ताकू जो रिलीजियन को देबा पय इच्छा अछि से देई परिबो. आर्टिकल 47 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखंतु कोन कहै आर्टिकल 47. ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ. The state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties, and particular the state shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medical purposes of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. देखंतु health related सब हॉस्पिटल रे केमती लोकन को भलो सेवा दिया जीवो दैट इज रिलेटेड कम्स अंडर आर्टिकल 47. एंड कंजप्शन जो इंटॉक्सिकेटिंग कंजप्शन केमती दूर करा जीवो मेडिसिनल पर्पस छाड़ी गिरी अदर कौन से इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स किंबा लिकर नेबा पई मिलिकिरी मध्य प्रोहिबिशन एक्शन नबो स्टेट सेटा मेंशन हेची आर्टिकल 47 रे. क्लियर. नेक्स्ट देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू right to education. The 86th constitutional amendment 2002 inserted article 21A in the Indian constitution. It provides free and compulsory education for children between age 16 to 14. The RTE Act has provision for a non-admitted child to be admitted to an age appropriate class. देखंतु एटे आपण जानिथिबे 86th constitutional amendment 2002 रे article 21 को इंसर्ट कराला कोन पई ना 6 एज टू 14 ईयर ओल्ड पर्यंत पिला मानकू कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करिया पई. बट एट देखंतु आरटी एक्ट कहिची राइट टू एजुकेशन एक्ट कहिची जो प्रोविजन अछि गोटे नॉन एडमिटेड चाइल्ड सी एडमिशन हेई नथिबो ताकू मध्ये एडमिशन करा जेबो कोडे ना तार एज एप्रोप्रिएट क्लास रे मध्ये ताकू एडमिशन कराय पई डायरेक्ट सी पाठ पढनथबो डायरेक्ट सी 8th क्लास रे मध्ये पढी परिबो. तार जदी 8 वर्ष पढिबा 8th क्लास रे पढिबार बयस तार हेइथिबो. बुझिले. देखंतु स्टेटमेंट कोडा करेक्ट. देखंतु द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट राइट टू एजुकेशन इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड केबे हितला 4th अगस्त 2009 रे एडा एनेक्ट हितला 2009 रे राइट टू एजुकेशन एक्ट which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 to 14 in India under Article 21A of the Indian Constitution. India became one of 135 countries to make education a fundamental right of every child when the act came into force. Act टा केबे आसिला RT Act 1 April 2010 April 1st 2010 रे ए एक्ट आसिला फोर्स हैला. बट इडा केबे एनेक्ट हितला
4th August 2009 रे द एक्ट मेक्स एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट बोलिकी कहूँ जार कि बयस 6 ରୁ 14 हो एंड इट रिक्वायर्स ऑल प्राइवेट स्कूल्स देखो एक्ट कहूँ इट रिक्वायर ऑल प्राइवेट स्कूल्स टू रिजर्व 25% ऑफ सीट्स टू चिल्ड्रेन टू बी रिइंबर्स्ड बाय द स्टेट एज पार्ट ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लान रे प्राइवेट स्कूल रे मध्य केते रहिबो 25% रिजर्वेशन रहिबो Kids are admitted into private schools based on economic status or caste based reservation. Private school रे को बेस रे करा जिवो ताको ना economic status or caste based reservation रे private school रे admission करा जिवो. It also prohibits all unrecognized schools from practice and makes provision for no donation or capitation fees and no interview of the child or parent for admission. से आउरी मध्य बैन करोची जे एतिकी टाइम 6 into 14 रे कौन से प्रकार फीज निया जीव नाही किंबा से मानकर कौन से प्रकार माने इंटरव्यू करा जीव नाही. The act also provides that no child shall be held back, expelled or required to pass a board examination until the completion of elementary education. आवश्यक नाही किछि जे ताकू बैक करबा ताकू बाहर कर दबा स्कूल रो किंबा से बोर्ड एग्जामिनेशन पास होला पर्यंत से elementary education पाई परिबो नाही. There is also a provision for special training of a school dropout. जो माने स्कूल ड्रॉप आउट होइतिबे स्कूल छाडी दिथिबे सेमानक पय स्पेशल ट्रेनिंग होची टू ब्रिंग देम अप टू पार विथ स्टूडेंट ऑफ द सेम एज. सेमानकर सेम एज रे स्टूडेंट मानक सहित ताकू मिसेबा किंबा तांको सहित पाठ पढेबा होची गोटे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोविजन अछि ए आर्टिकल रे. जानिले नेक्स्ट देखिबा with respect to index of industrial production IIP, which of the following statement is are correct? It is calculated and published by the Central Statistical Organization CSO every 3 months. 3 मास को थरे CSO द्वारा आपको कैलकुलेट करा जाउची and publish करा जाउची. The CSO has revised the base year of the IIP from 2012 to 2016. देखंतु एटा ऑप्शन कोडा करेक्ट हबो none of the option. That means कोडा भी करेक्ट नो. चलंतु इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऊपर डिस्कशन करिबा. Index of industrial production is an index, गोटे index that indicate the performance of various industrial sector of the Indian economy. Indian economy रे जेते various जो industrial माने अछंती industrial sector अछि सेमानकर परफॉर्मेंस को बेस करिकरी एडा गोटे इंडेक्स बाहर करा जाय थाए. And it is calculated and published by Central Statistical Organization. एडा ठीक अछि Central Statistical Organization but it is दिया जायछि every 3 month. एडा होछि incorrect. एडा होछि every month. सबु मास रे इंडस्ट्रियल सेक्टर रो परफॉर्मेंस इंडियन इकोनॉमी रे इंडस्ट्रियल सेक्टर रो परफॉर्मेंस केमती बाहर करा जाय सबु मास रे. It is a composite indicator of the general level of industrial activity in the economy. एडा होछि गोटे कोन ना गोटे composite indicator. एटा होछि गोटे कंपोजिट इंडिकेटर ऑफ द जनरल लेवल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द इकोनॉमी. बुझिले तो एटा जो रिवाइज्ड बेस ईयर ऑफ द आईआईपी एटा 2015 टू 16 हबनी. एटा येटा आई विल मेंशन इन कमेंट बॉक्स. क्लियर. TOR or the onion router is often associated with TOR but TOR the onion router. The onion router is often associated with देखंतु cryptocurrency, 5G network, dark net, internet of things. तो onion router onion रो अर्थ कोन पियाज आपण माने जानि थिबे जहा को जहार देखंतु आरो ए भितर ऑप्शन भितर आपण गोटे मेंशन करिवे टॉर रो गोटे जिंस जानिबार अछि. गोटे जिंस आपण जेते बाहर करथुबे सेते भितर को जाउथुबे किंतु सर नथुबो. तो पियाज रो सेमती आपण गोटे लेयर बाहर करले आउट लेयर आसीबो आउट लेयर बाहर करले आउट लेयर आसीबो आउट बाहर करले आउट आसीबो किंतु तार लेयर सर नथुबो. बुझिले एटा होची गोटे ओनियन राउटर. ओनियन मींस आपण देखिबे ऑप्शन सी हबार डार्क नेट. आंसर देखिबा डार्क नेट. डार्क नेट होची जोटा कि बहुत सेतरे स्कैम होची सेतरे फ्रॉड होची साइबर हैक करा जाउची हैकर. तो टॉर गोटे होची इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एनेबलिंग एनोनिमस कम्युनिकेशन. एनोनिमस कम्युनिकेशन बुझिले एनोनिमस कम्युनिकेशन होची एटा गोटे सॉफ्टवेयर और जोटा कि आपन को सब सहयोग करिवो एनोनिमस कम्युनिकेशन. आपन से किए कथा होची सेटा आपन माने जानि परिबे नै अजणा कम्युनिकेशन. It directs internet traffic through a free worldwide voluntary overlay network consisting of more than 7,000 relays
to conceal a user's location and usage from anyone performing network surveillance or traffic analysis. ସେମାନେ ଗୋଟେ ୟୁଜରର ଲୋକେସନ୍ କିମ୍ବା ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ଫ୍ରମ୍ ଏନି ୱାନ୍, କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ନେଟୱାର୍କ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆନାଲାଇସିସ୍ ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ଅଛି, ତାର ଲୋକେସନ୍ କିମ୍ବା ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ୟୁଜିଂ Tor makes it more difficult to trace users internet activity, also internet activity ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। Tor's intended use it to protect the personal privacy of its user, पर्सनल प्राइवेसी को यूजर रो पर्सनल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करिया फैमिली के Tor यूज करा जाए, एज वेल एज देयर फ्रीडम एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंशियली थ्रू आईपी एड्रेस एनोनिमिटी यूजिंग Tor एग्जिस्ट नॉट्स। तार आईपी एड्रेस मध्ये जोटा कि एनोनिमिटी रहइबो, आईपी एड्रेस रो लोकेशन किंबा तार आइडेंटिटी किछि जणा पड़िबो नाही। तो Tor दैट इज यूनियन राउटर इज लोकेटेड, यूनियन को मन रखंतु, यूनियन राउटर इज एसोसिएटेड विथ डार्क नेट, बुझिले। थैंक यू वेरी मच। वीडियो जदि आपको पसंद लगी थाए, जदि आपंकर कौन कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट होते, जदि आपको एग्जामिनेशन हेल्पफुल होती, देन श्योर आप कमेंट बॉक्स रे मेंशन करूँ, बिकज आपंकर कमेंट बॉक्स रे गोटे कमेंट आसला पर हमको खुशी लगी थाए। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।